In this video, we will create a program using nested conditional operator. In the program, we will find out maximum among 4. And guys, this program is created on demand of one of my students. So guys, let's create the program. So first of all, we include a header file stdio.h that is necessary for using standard input output operations. Now we created main function that is necessary for execution of the C program. Every C program is started its execution from main. Now we declare 3 variables A, B, C and D. Sorry, we are creating program for finding out maximum among 4 using nested conditional operator. Now we will input values in all 4 variables. So guys, using scanf, we will use 4 time %d because we are entering 4 values into A, in B, in C and in D. Now finally we will use conditional operator to find out max. So first of all we test is A greater than B. If A is greater than B, then we will check is A greater than C, and if this is true, then we will check A greater than D. So guys, if this is true, the max is A, sorry, the max is A, otherwise the max is D. Watch this carefully guys. Fine. And if this is false, that means if A is not greater than C, then we have to check C, we have to check among C and D. So we put a column and test if C is greater than D. If this is true, then max is C, otherwise the max is D. So guys, this conditional is completed. Now if this condition is false, that means if A is not greater than B, fine, that means A cannot be maximum. So we have to compare B, C and D. So we will check if B is greater than C, then we will check if B is greater than D, and that means maximum is B, otherwise maximum is D. So guys, but what if this condition is false? It means that A greater than B is false, that means A is not max. If this is false, B greater than C, that means B cannot be max. So now we are left with two choices. Those are C and D. So we will compare C with D. If this is true, max is C, otherwise max is D. So guys, एक काम करते हैं, इसे सिंगल लाइन में ले लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा ये वरना. Now this is on our one screen. एंड एक लाइन में अरेंज करने के बाद मैं इसे printf में डाल दूंगा जिससे डायरेक्टली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए.
तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा 4 में से मैक्स निकाल रहा है नेस्टेड कंडीशनल का यूज करके। फाइन गाइस, इसको हम डाल देते हैं प्रिंटफ में। द मैक्स इज %d। तो गाइस आई थिंक रियली बहुत हॉच पॉच है आपके लिए, बट जब कंडीशनल नेस्टेड होता है, बहुत ज़्यादा नेस्टेड होता है, तो डेफिनेटली उसकी जो रीडिंग कॉम्प्लेक्सिटी है वो प्रोग्रामर्स के लिए बढ़ जाती है। आई डू एग्री। आप सिंटैक्स को जैसे भी लिखना चाहें आप उस तरह से लिख सकते हैं ब्रेक करके। सो गाइस दिस इज फाइन फाइन। 12 2 56 3, so max is 56. Now second trial run, 100 2 32 15, max is 100, and final 45 65 32 10, max. And one more try, 7 8 9 6 5 4 3 2 1 4 5 5 6 8. So guys, hope so ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। मैं एग्री करता हूँ डेफिनेटली इसका जो ये जो सिंटैक्स है कंडीशनल मैक्स का ये डिफ़िकल्ट है, तो बेसिक कंडीशनल से आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। एंड इस प्रोग्राम का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम की नीड हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।